I hope you can see the new document. Yes, sir. Before I start these inbuilt solver, quick review, who will tell me about some numerical tools, numerical schemes to solve initial value problems. At the moment, I'm talking about initial value problems. If we have dy by dt is some function of y and t, y at 0 is some value y naught. So what are the schemes? These schemes you need to repeat by yourself. Euler's method, both forward and backward. And then RK method. R2 and R. RK method. ये मैं रिपीट यहाँ नहीं करूँगा, दिस इज अंडर ग्रेजुएट लेवल, लेकिन ये आपको आने चाहिए। ये सॉल्वर्स आएंगे तो फिर ये जो बिल्ट इन सॉल्वर हैं जो कि आज हमारी डिस्कशन है वो आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। सो व्हाट इज बेसिक सिंटैक्स, इसको आज हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। So to solve initial value problems, there are certain built-in solvers in MATLAB. For example, ODE45 solver, ODE23 solver, and then ODE15, and so on and so forth. How to utilize these solvers? If you look at this problem, dy by dt equals to f of y and t, and y at 0 is y naught. जब आप मैनुअल सॉल्व करते हैं या थ्रू योर ओन कोड सॉल्व करते हैं तो क्या क्या इनपुट्स होनी चाहिए? What information should we have or should we give to computer? The right hand side function होना चाहिए और initial condition होनी चाहिए. So we must have the right function, initial condition, and the time of simulation. Time और tolerance भी epsilon error की value. So a general syntax for all these solvers. Here we write output arguments x and y. You could also write t as independent variable. Then we have solver name and then input arguments. So this is basic structure. You have to specify the solver name. आप कौन सा solver apply कर रहे हैं? ODE45 है, ODE23 है, ODE15S है for stiff systems. ये ऐसा हम डिस्कस करेंगे. And then you need to give input arguments. There are 3 arguments that are necessary to utilize these solvers. 3 arguments at least provide करेंगे आप तो ये solver work करेंगे. इसके बाद जो भी सुमेरा ने बताया tolerance है, that is an optional argument. If you not provide the tolerance, this solver will take the tolerance by default जो कि इसमें solver में set हुई है. But if you want to improve the accuracy, you can specify the tolerance. So there are 3 basic ingredients जिनके बगैर काम नहीं चलेगा. वो solver खुद से assume नहीं करेगा because solver does not know which differential equation you are going to solve. So you must provide the right hand side function. Does not know the condition. वो अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकता है. So you have to give the initial condition and the time. जिस तरह आप मैनुअल सॉल्व करते हैं आपको बताया जाता है 4 इटरेशंस करें, 5 करें, वैल्यू एट 0 इज गिवन एंड वैल्यू एज 1 यू नीड टू फाइंड, और उसमें आपको अगर 0.2 का गैप दिया जाता है इट मींस यू नीड टू परफॉर्म 5 इटरेशंस. तो ये 3 इंफॉर्मेशन देंगे हम और सॉल्वर को जो है वो अप्लाई करेंगे. And keep in mind, I will explain all these things only for one solver. Exactly, you can repeat these things for other solvers.
What I'm saying is that if I am applying ODE 4-5, in the same way you can apply ODE 1-5, ODE 2-3 and other solvers. In syntax यही होगा. But you must know if you change the solver, what is the impact and in which situation you are going to apply stiff solver. I mean, if your differential equation is non-stiff, then you don't need to go for stiff solvers. At the moment, I think you don't know what is the meaning of a stiff differential equation and a non-stiff differential equation. किसी को भी इस वक्त idea है? Otherwise, I'll be explaining in next when I am using the stiff solver. अभी हम OD 4-5 utilize करना है हमने. That is for non-stiff problems. Any PhD student? What is difference between a stiff and a non-stiff differential equation? Imtiaz, can you tell me? Sir, sorry, नहीं यार. So have you understood my question? What is difference Yes, sir. between stiff and non-stiff? Yes, sir. क्या difference है? Miss Kubra, आप बताएंगी? What is difference between stiff and a non-stiff problem? तो currently नहीं याद. याद नहीं है. सुमेरा? सर जो स्टिफनेस है सर इसमें शायद सर टाइम की इन्वॉल्वमेंट है. टाइम की इन्वायरमेंट तो सब में होती है. नाजिया नजीर, मिस नाजिया, आर यू विद अस? यस सर. जी बताइएगा स्टिफ और नॉन स्टिफ में प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस होता है? सर सॉरी मुझे नहीं पता. ओके, मेरा मकसद मुकम्मल हो चुका है. सो दिस इज सम अब सरप्राइज है सब लोगों के लिए. अब आप लोग यानी नॉन स्टिफ मेथड्स जो है वो कैन बी सॉल्व बाय द स्टिफ प्रॉब्लम. सर इस तरह से कुछ सर क्लियर नहीं है इसके बारे में कुछ आइडिया वैसे क्लियर नहीं है. कंसेप्ट क्लियर नहीं है सर. हाँ ठीक हो गया. सर इसके सॉल्वर्स डिफरेंट है है कि भी नॉन स्टिफ प्रॉब्लम्स को तो नॉन स्टिफ मेथड्स कैन सॉल्व स्टिफ प्रॉब्लम्स. और सर इससे पहले इसके बारे में No. What are you saying? Non-stiff methods can solve स्टिफ प्रॉब्लम्स. Why? क्यों जरूरत है अभी जब आपके पास हैं जो सही? ओके, सोचिएगा इस पे. ठीक है सर. As a hint, I'm writing one problem. This is some stiff problem. So OD 4-5 cannot solve this problem. What I'm saying is that solvers so available are. You have so many built-in solvers. But the actual thing is that you must know which solver is applicable in which situation. If you have some stiff problem and you are applying ODE 4-5, you'll not get some accurate results. But the question is that if you don't know what is stiff, what is non-stiff, आप सबको एक ही लाठी से हाँकना चाहेंगे, then there will be trouble. ठीक हो गया? No experts can tell me. मैंने right side पे function लिखे हैं e⁻²t e⁻100t. Is it a stiff problem or non-stiff? If this is stiff, क्या आपको feel हो रहा है यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है. और कोएफिशिएंट नेगेटिव है. होने से ये stiff नहीं नेगेटिव है सर. ये और एक डिके की तरफ जा रहे हैं. जा रहा है और सर्टेन स्टेज पे ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगा. You are not getting the point. Okay. dy by dt is e-2t. Then a third problem, dy by dt e-100t. And this is the third problem. इसको 1 लें, इसको 2 लें, इसको 3 लें. Same conditions. Y at 0 is 1. Y at 0 is 1. Now one problem is stiff and 2 are non-stiff. सर इनका जो कोफिशिएंट है एक -2 है और एक -100 है. डिफरेंट प्रॉब्लम है सेम सॉल्यूशन में भी. मतलब जब वो दोनों कंबाइन होंगी तो उसमें जो एक्सपोनेंशियल डिके होगा वो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा. Yes, you are approaching the answer, Nazia. यस सर. Okay, it is not the exponential -2 that make
this differential equation as stiff. It is not the coefficient minus 100 that makes this stiff. Agar ye exponential negative 2 separate and we have separately E negative 100t, these are non-stiffs. You can apply OD45. It's the combination that makes this problem as stiff. When you see the growth of one function is far, far away from the growth of the second function, or if the decay of one function is far, far different from the other, this is a stiff problem. Look at this exponential negative 2, iski speed of decay different hai exponential negative 100 se. So if you have two functions involved in some differential equation that have relatively very, very different speeds of decay or growth, this is known as a stiff Stiff problem. problem. You got the point? Yes, sir. Because if you want to control one function, दूसरा आपके कंट्रोल से निकल जाएगा, और अगर आप सेकंड को कंट्रोल करना चाहेंगे, फर्स्ट आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा. दिस इज द सिचुएशन कि इनकी स्पीड्स बड़ी डिफरेंट हैं. तो यहाँ पे जब हम वो जो सॉल्वर्स अप्लाई करेंगे जिनके साथ एस का वर्ड होगा, वो स्टिफ सॉल्वर्स हैं. आई होप आई हैव गिवन द मैसेज. एट द मोमेंट तो हम ये सॉल्व करेंगे लाइक दिस प्रॉब्लम 2 और प्रॉब्लम 3. वी कैन सॉल्व दिस विद ODE45. Okay, ingredients. So I have the same message for all of you. It's very easy to use built-in tools like Simulink or PDE tool or ODE45 or boundary value solvers. But the real thing is what is the crux behind these methods. किस situation में किसको choose करना है. ऐसे नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ ODE45 लगा के तो आप सॉल्व करके कहीं सोल्यूशन आ चुका है. एनालिसिस करना है, देखना है प्रॉब्लम का क्या है. सो इंग्रेडिएंट, लेट मी राइट सम प्रॉब्लम. dy by dt is equals to, let me write t over y, and y at 0 is given like 0 or 1, whatever, this doesn't matter, जो भी condition है. So we must provide this function to the solver and this condition to the solver. अब मैं एग्जैक्ट जो है वो इसके वो लिखने लगा हूँ 3 आर्गुमेंट्स. सो ty, you could use x as independent variable. Solver name, then first input argument is the handle ODE function. You could write anything here. You have to provide the function which is on the right hand side. Okay. The second thing you need to give is the time span. And the last one is the initial data. Why not? When you provide these 3 information to your solver, it will work and give you the output. Independent variable, if you wish to see, and this y as dependent variable. I hope मैंने पिछले किसी लेक्चर में आपको बताया था कि MATLAB के जो फंक्शंस हैं जो लेफ्ट साइड पे होता है, ये क्या होते हैं? These are called Output arguments. Output arguments. This is the function name. At the moment हम यहाँ solver name को लिखेंगे. And these are called Input arguments. So let us solve a problem with the help of ODE45. पहले मैं यहाँ sketch देता हूँ आपको problem का, and then we will apply in MATLAB. Okay. So dy by dt is t by y at 0 is 1. This is the problem. By the way, if you want to find analytical solution, exact solution, how could you move? This is a separable problem. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So y dy is t dt. Sir, यानी x square Y y square square plus t Y square. square. जी sir. ठीक. Give me the final result. So y square equals to t square plus 2c. 2c again we can put some constant a. And initial data is y at 0 is 1. So when t is 0, y is 1, a is 1. A is 1.
So what is exact solution? Y y exact square is equal to t square plus 1, square root of t square t plus. square plus 1. So this is the exact solution. So if you have this problem, you don't need to apply any numerical scheme, because once you have the exact solution, you don't go towards numerical methods. हम तो problems वो solve करेंगे इन solver से जो कि non-linear problems होंगे और जिन पे ये आपके tools work नहीं करेंगे. But at the moment हमने इसको exactly भी solve किया है. We'll see कि if we apply ODE45 solver, then we have exact solution. We will plot both the solutions. So let us imagine we have this as the canvas to write some program. So two things. You clear the memory, you clear the screen, everything. Now we need to define a function in MATLAB syntax. The function कैसे define होना चाहिए? T by y कैसे define करेंगे? This is the function t by y जो कि right hand side थी. ये input देना है ना हमें? जी सर, जी जी सर ये फिर से बताइएगा प्लीज, फंक्शन कैसे दिया हम लोगों ने? F, we are going to define a function f which is right hand side. This is a Sir. function of two variables t and y. Okay? जी सर. So this at will tell you कि ये किन variables का function है. And then Okay. the expression t over y. So this is vector Yes, sir. division. मैं बताया था डॉट स्लैश करेंगे every सर वो value वेक्टर वाइज. divided by every value. Okay. Now we can use the solver. If you wish, आप वो बाकी दोनों arguments भी यहीं लिख दें या आप direct जो है वो उस arguments के अंदर उसको specify कर दें. So I have written the function. Okay. Now I use the solver. Look at this, in 3 lines you could solve this problem. T and y as output. The solver name is ODE45. I will give you the details why it is ODE45. So first is the function. We will write f here, and f, the program will take f from this line. If I change f in some other problem, you will change here, but you give f the same input here because program यहाँ से इसको read कर लेगा f क्या दिया है. Second क्या input था? From where to where? 0 to let us say 0.3 we want to solve. Solution at 0 is given. We want to compute solution at 0.3 and the initial condition. What is initial condition? y at 0 is equal to 1. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे. One. Like Simulink, आप डबल क्लिक करते थे इंटीग्रेटर को तो आप वहाँ पे वो वैल्यू देते. इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि ये इनिशियल कंडीशन है. आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू देनी है. सो गुड, बस ये सॉल्व हो गया है आपका प्रॉब्लम. जस्ट गिव द फंक्शन, टाइम स्पैन and the initial condition, nothing else. I repeat, this is the solver name, function, time span जो कि मैंने अभी पहले बताया था आपको, and this is initial data, initial condition. And then there are post processing commands, plotting की commands हैं. With this command MATLAB will generate numeric data, and then you can of course plot xy or ty, plot ty, and you enjoy the solution. You see how simple is the application of these solvers. What you need to give one function and then time span and initial condition. If you wish, you can directly define this function here. Then this line will be removed. So actually, this is a one line code. Output arguments
solver name, just write function here. What I'm saying is that you could have written this code like this: ty is equals to ODE45 at ty then 0 till 0.3 the time span and 1. So it is up to you कि आप पहले इस चीज को सेपरेटली f डिफाइन कर दें और फिर यहाँ पे जस्ट उसका नेम लिख दें f. So I would suggest you write separately the expression for f, so that if you are solving 5 to 10 problems, then you can change this, and here you will not change because here you will write just f. Program read कर लेगा f क्या दिया हुआ है आपने. Okay, it's time to solve this problem with the help of MATLAB. We are running short of time, last 5 minutes. I hope I will be completing this problem. So let me share the MATLAB. Can you see MATLAB command line? Yes, sir. Okay. And what you see now? प्रोग्राम है कोई सर, कोड जी कोड है. OD45. यस सर. Okay. Here is the function f, which is x over y. Here is the call for the solver. It is exactly the same program that I have shown you on the document. And then the plot command. Let me comment all these, which is regarding to post processing. Comment. So this is the function. This is call for the solver, and this is plot command. That's it. Ikra, can you explain what is the problem we are solving? सर एक ओडी प्रॉब्लम गिवन है. सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन क्या है और फंक्शन को कैसे लिखते हैं. उसमें इनपुट आर्गुमेंट्स होते हैं और आउटपुट आर्गुमेंट्स फंक्शन नेम. सबसे पहले एक्स वाई ये हमारे पास आउटपुट आर्गुमेंट्स हैं. ODE45 ओडी टाइप लिखी हुई है. फिर इनपुट आर्गुमेंट्स हैं ब्रैकेट में. सबसे पहले फंक्शन एंड देन टाइम स्पैन एंड देन इनिशियल कंडीशंस. ओके, इनिशियल कंडीशन. सो ये f कहाँ से प्रोग्राम लेगा? ये 3 लाइन में जो गिवन है, ये ऊपर जो हमने डिफाइन किया रो नंबर 3 में. सही. सो इफ आई आस्क यू टू सॉल्व dy dt is equals to t square plus y square. So where will the change in this program with the same लाइन 3 में सर फंक्शन के साथ. Yes, you only need to change this function. Here you will write t square t dot cap square plus y square. y dot. In the same code you can enjoy the solution to the new problem. Same time span. अगर time span different है, 0 to 1 solve करना है, then you can write 0 to 1. Initial condition y at 0 is 5. You could write 5 here. Okay, it's time to compile this program. And this is just plot command. Very simple. Plot x, y. This is some color scheme. Black color with diamond and continuous line. Okay, at the moment, if you wish, you could just
write plot XY so that MATLAB takes its default color settings, and let us don't make this grid on. Just to make life simple, if you look, this is 3 lines code: F, solver, and post processing, which is the plotting command. Within 3 lines, you can solve an initial value problem with the help of ODE45 solver. If you have 10 problems, so it would take just 1 to 2 minutes and you can solve these 10 problems. क्योंकि आप मैनुअल इतना टाइम लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, and even if the problem is non-linear, you won't be able to solve it analytically. अगर मैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस राइट साइड पे इंट्रोड्यूस कर दूं और इस तरह की वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करूं कि वो सेपरेट ना हो, इम्प्लिसिट हो, then you will not be able to solve analytically. So let me compile this program. Okay. Do you see the output?